और आपका हो गया एक्सीडेंट, और यहाँ पर एक्सीडेंट में आपकी टांग टूट गई और टांग मेरी वैसे भी टूटी हुई है, आप सबको पता ही है। आई एम हॉस्पिटलाइज, तो पता नहीं शायद इसी को सोचकर मेरे ध्यान में ये आया। Hello friends, and how are you doing today? And today's video is about two new cue cards that's been asked by the examiner to the students, and students have reported us. हमारे students जो हैं वो शायद आज तक के रिपोर्टर से भी तेज़ हैं, और जैसे ही कुछ नया पता चलता है मेरे साथ शेयर कर देते हैं, so that I can help other students as well to get to know about the latest updates. एज़ यू नो कि IElts स्पीकिंग की बहुत सारी मार्केट्स में बुक मिलती हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी बुक बाय किया होगा तो ये दो नए क्यू कार्ड्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ IElts स्पीकिंग बूस्टर, क्योंकि जैसे ही हमें ये दो नए क्यू कार्ड्स पता चले हमने इन्हें IElts स्पीकिंग बूस्टर में अपडेट कर दिया है, और जिन स्टूडेंट्स ने भी ये बाय कर रखी है ऑटोमेटिकली उनके पास इसकी अपडेटेड वर्जन ओपन हो चुकी है, जिसमें ये बिल्कुल टॉप पर दो नए क्यू कार्ड्स उन्हें दिखाई देंगे। Without wasting too much time, let's quickly check out what the two new cue cards are। और इस एक वीडियो में मैं आपके साथ इन दोनों के ही सैम्पल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि आपको अलग आइडिया ना कंसिडर करना पड़े। अगर एक ही आइडिया से हमारे दोनों क्यू कार्ड बन जाएं तो बात ही क्या है। You're watching YouTube channel Raman IElts Coaching, and I'm your IElts expert Ramandeep Singh. And if you haven't subscribed this channel until now, do it right now and hit the bell button to get the notifications of my newly uploaded videos. The first cue card is talk about a lesson you learned. तो इसका साउंड जो है देखिए, हमारे बुक में ऑलरेडी जब हमें किसी स्टूडेंट ने बताया था अबाउट लेसन यू रिमेंबर और लेसन यू हैड एट स्कूल, तो वो एक अलग तरह से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। वो भी क्यू कार्ड IElts स्पीकिंग बूस्टर में अवेलेबल है, बट हेयर इट इज़ मोर लाइक अ लेसन यू हैव लर्न, मतलब आपने कोई सबक सीखा, तो यहाँ पर हम इसे किसी मिस्टेक के साथ एसोसिएट करेंगे। द फॉलोअप्स कैन बी व्हेन इट वाज, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट लेसन डिड यू लर्न। तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा आइडिया, जो चाहे आप जेंडर वाइज बॉय हैं या गर्ल हैं, आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। चाहे ये थोड़ा सा लड़कों के हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और नो मैटर आप एकेडमिक या GT स्टूडेंट हैं, बहुत ही रियलिस्टिक आइडिया है। हर कोई स्टूडेंट इसके बारे में डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है। हम बात करेंगे आपकी क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स राइडिंग अ बाइक और अ व्हीकल। ठीक है, आप थे अपनी टीन एज में, और जैसे सभी टीनेजर्स को होता है कि उनको बाइक मिल जाए चलाने के लिए, फुल स्पीड पर वो भगाएं, लेकिन अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं अलाउ करते बिकॉज वी आर अंडर एज, क्योंकि अनटिल अनलेस 18 ईयर के आप नहीं हो जाते आपको लीगली व्हीकल चलाना अलाउड नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आप हमेशा कुछ ऐसा मौका ढूंढते रहते थे कि काश आपको ये व्हीकल चलाने का मौका मिल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ, एक दिन आपके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना इस ट्राई किया जाए। आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया और आप दोनों ने बाइक को घर से बाहर निकाला और ले गए सड़क पे। अब तेज़ भगा रहे थे और एकदम से क्या हुआ कि इंटरसेक्शन आया और आपका हो गया एक्सीडेंट, और यहाँ पर एक्सीडेंट में आपकी टांग टूट गई और टांग मेरी वैसे भी टूटी हुई है, आप सबको पता ही है। आई एम हॉस्पिटलाइज, तो पता नहीं शायद इसी को सोचकर मेरे ध्यान में ये आइडिया आ गया। तो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए, आपके पेरेंट्स को जब ये खबर मिली वो भी बहुत जल्दी से पहुँचे। दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। पापा की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन दिस वाज द टाइम कि आपने होल हार्टेडली उनसे सॉरी फील किया और आपने प्रॉमिस किया कि आप आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और हमेशा जो वो कहेंगे उसे मानेंगे। एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड द क्यू कार्ड of a lesson you learned. So let's quickly check out
how the sample answer is, and it is exactly as in the speaking booster जो मैंने आपके लिए लिखा है, और अभी मैं speaking booster से ही आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ. And it is very important that you work on your speaking ability. जितनी fluently और comfortably आप बोल पाएंगे उतना ही अच्छा आपका score आएगा, which is more important than actually the content and the idea behind the cue card. Well, our parents and seniors always try to teach us important lessons of life, but still, there are few things that we learn from our mistakes. Here, I would like to narrate an incident when I met an accident and got badly injured for committing a blunder. I vividly remember I was almost 15 years old, and most teenagers of my age are curious to ride motorbikes. I requested my father many times to teach me how to ride a bike, but he always refused to do so and warned me not to try until you turn 18, as it is the legal age in my country to ride a vehicle. I always used to keep on thinking and dreaming riding a bike at full speed. One day, I was home alone as my parents were out of town. I took it as an opportunity and invited one of my friends at home, and out of curiosity, we took the bike on the main road. I was driving it comfortably with my friend sitting behind, and all of a sudden, we met an accident at an intersection due to overspeeding. My leg got fractured and I was rushed to a hospital. Luckily, my friend escaped any injury. My parents also arrived as soon as they received the news, and they were really concerned. At this point, my father was very angry for not obeying him, but he was controlling his anger somehow. This was the time when I apologized my father and felt sorry wholeheartedly and said, I have learned the lesson, and now I will think about riding a bike only when I will turn 18 and will have enough maturity to handle a vehicle safely on road. So this is a lesson that I learned from a mistake. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!